taking your ankle out on the tackle points. या दुर्गेश पूरी तरह से तैयार रहते हैं, बट उनकी कमजोरी कहीं एक रही है। तो जब जब चंबल के मुकाबले अंतिम समय में जाते हैं तब वो थोड़ा सा मैच से बाहर हो जाते हैं। अगर सही समय पर रिवाइवल आया तो इस चंबल को रोकने के लिए बड़े डिफेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बट अभी नवीन समय हो चुका है। प्रीव्यू करते हैं मैच नंबर 62 से पहले एक और डिफेंडर की बात कर लेते हैं। चलिए हम्पी हीरोज के डिफेंडर की हमने बात नहीं की है, तो उनके भी डिफेंडर को और थोड़ा सा प्रधान देते हैं। No, definitely, because see, the reason why we are speaking about him is because Durgesh Kumar always comes against him. And the corners, especially, you see, in that left corner, you have Sukesh Kulal, that is okay. For the right corner, Humpy Heroes still need to find out that strong right corner. Whether it's going to be Narasimha Murthy or Krishna Kumar is the big question. Of course, Narasimha, the coach, is always, going in so very much, not Kannadiga. But the way he speaks Kannada is absolutely fine. And I'm sure today, if he's getting a chance, he will go out there on that right corner and perform well. जी आज बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला और हम्पी हीरोज की डिफेंस को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से वो इंप्रेसिव फिगर्स उनके लिए नजर नहीं आए। बट आइए आप चलते हैं मैच नंबर 62 को फाइनली प्रीव्यू करने। चोला वीरेंस बनाम काजीरंगा राइनोज और नवीन तमिलनाडु के खिलाड़ी एम गौतम एक बार फिर से जिन्होंने लॉकडाउन में एज एन इलेक्ट्रीशियन वर्क किया है। परवेज नियर बाय 500 रुपए दिन का कमाते थे, बट कबड्डी का उनका डेडिकेशन उन्हें यहाँ तक इस मैच तक लेकर आया है। बट वो डेडिकेशन की फिर से उनमें स्पार्क की जरूरत रहेगी हमें लगातार। I will tell you what, along with the dedication, he also have to have some electric works also going into his defense position. Let's see what Gautam has always done wrong, isn't it? He's made sure that he initiates the tackle but then goes back. He initiates it and then goes back. Unsuccessful tackle of Gautam. If we have a look at that, that will be very, very interesting to see how is Gautam making those errors, and making sure that he does not go full-heartedly. It's been his problem there, Arshit. जी और गौतम के यहाँ पर पहले अनसक्सेसफुल टैकल्स की तरफ चले, बट मेंशन सिंह के आज उनके विरुद्ध यहाँ पर होने वाले। बट आइए गौतम कैसे एम गौतम जो है कभी कभार सोलो टैकल्स के लिए चले जाते हैं, और जैसा आपने बताया था नवीन कि वो जाए या ना जाए उन्हें पता नहीं चलता है। Exactly, see, that has been the problem, Arshit. That always has been the problem. If he decides to go, he has to go for it. And unfortunately today, whether he plays, does not play, we don't know, because his left shoulder is, very badly injured. So if he's playing, it'll be really nice. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस खिलाड़ी का वहां पर चलना। बट क्यों हम बात कर रहे थे एम गौतम की, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता था मेंशन सिंह के अगेंस्ट। मेंशन सिंह लगातार हम इनका नेम मेंशन कर रहे हैं, चाहे हमारे प्री शोज हो पोस्ट मैच हो, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एज अ रेडर इनमें वो स्पार्किंग परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। Yeah, very much. And watch out there, Chola Veerans, your left corner also has a problem, because Mention Singh can come in from that right side and also make sure he will also put the left cover also into a bit of a bother. And without Gautam, Praveen Ayanar should be really watching out for it. And Mention Singh will come all guns blazing today, Harshit, because they don't have anything to lose. They have to win this today. Even a tie is not enough. They have to win this by at least 6 points. That's what they want. They want full points out of it. और जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है तब आप ज्यादा खौफनाक हो जाते हैं। बट प्रवीण कुमार आयनार की एक बार फिर से चलिए हम वीडियोस को और डिकोड करेंगे इसमें कि कहां वो गलतियां कर रहे हैं नवीन। Yeah, very much, because when Mention Singh comes in from that right flank or even that left flank, because he can turn over, and look at that, Praveen Kumar Ayanar from that right corner goes in very advanced. See where he's tackling the Raiders outside the back line. Every time he goes for the tackle, almost from the bonus and outside the back line. Why is he not allowing the Raiders to come inside? Today, he will have to have a lot of patience, Praveen Kumar Ayanar, and make sure Mention Singh does not allow us to mention his name. Yeah. और आइए बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिनके बारे में मैं सुपर टैकल, सक्सेसफुल टैकल्स के लिए कहूं या फिर रेड्स की बात करूं, धीरे धीरे ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। बट डिफेंस में पिछले कुछ मैचेस से काजीरंगा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो है इरनजीत सिंह। आइटली की रंजीत मैं कहना चाहूंगा, और अब उनमें इंटेलिजेंस आ रही है नवीन। सबसे अच्छी बात ये, आइए उनके पैकेज की तरफ चलते हैं। Yeah, Iranjit Singh has been very good. He was a raider, then he got converted into a defender, and then he is supporting Kaziranga Rhinos from every corner. Look at that, left corner, and then the right cover. He goes out there, and when he goes for the tackle, it stays tackled, Arshit. So that's wonderful. I think we've been running out of time as well. We'll have to, probably go out there and call the teams off as well. जी हाँ, तो चलिए अब समय आप सभी का ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अब समय हो चुका है इस मुकाबले की शुरुआत करने का। पहला मुकाबला चोला वीरेंस बनाम काजीरंगा राइनोस। बट सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एक भूमिका निभाई है, और इस कबड्डी की मर्यादा को हम सभी बनाए रखेंगे सत्यनिष्ठा के साथ। आइए प्लेज वीडियो आप सभी के समक्ष। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play
safe and clean sport. Definitely safe and clean sport as well, because this is the highest way where we can respect Kabaddi. And match number 62, it's a decider in of its sorts. Chola Veerans have to win this. Kaziranga Rhinos have to win this to make sure they find their place in the booster round. Harshit, I think now it's time for us to call on both the teams on the mat. Supremely excitement of Saturday is here going on. जाता है विविधता में एकता. आज आप सभी के लिए है कई सारे सरप्राइजेस, तो तैयार हो जाइए उन सरप्राइजेस के लिए. बट अभी समय है दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का. Here we are inviting first Chola Veerans. और पिछले मैच में काजीरंगा के हर खिलाड़ी के चेहरे पर था अग्रेशन, अग्रेशन और अग्रेशन. Here we are inviting Kaziranga Rhinos. Thank you so much, Harshit. As this match was never ever going to be so interesting if the Kaziranga Rhinos had not won the their previous game yesterday against the Sonics. Yes, the 7 p.m. 7 o'clock game yesterday was so much electrifying, so much intensity behind that match. That was very nice, and that is why Chola Veerans. Now look at what am I watching? My God, we never knew this. Gautam Murugan has a place in the starting 7. That is wonderful to see. Right, Mahendra Prasad Dandapani, Iniyavan Vaidyanathan will be there in the both corners as well. Arun Kumar Anjapuli, the captain, and of course he will be raiding with Rajasekaran Rajendran. Wow, that's a nice inclusion. Mohan Das will also be there, but with Praveen Kumar Ayanar, Gautam Murugan. We had our doubts, Harshit. Will Gautam Murugan come in or no, because he's got a shoulder injury, but he is playing. This is a must-win game for the Chola Veerans, Harshit. या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि यहाँ पर इस बड़ी गेम में एक बड़ी जीत की तरफ यहाँ पर दोनों ही टीमें देखना चाहती है. बट काजीरंगा राइनोस की आइए शुरुआती साथ की बात करते हैं. मुकीबुर रहमान आपको नजर आएंगे, बट अथोबिया सिंह के साथ हम शुरू करते हैं. ये मिडल में नजर आएंगे. इलियास खान होंगे राइट कवर पर, लेफ्ट कवर पर होंगे इक्ती अहमद, राइट इन पर जेम्स होंगे और लेफ्ट इन पर गौतम दास, राइट कॉर्नर पर ऋषिकेश शर्मा, लेफ्ट कॉर्नर पर मुकीबुर रहमान, विक्रमनाथ मैंशन, समीर शाह, अंकुर और इरनजीत सिंह आज सब्स्टिट्यूट में है. नवीन, दोनों ही टीमों से शॉकिंग न्यूज आई है शुरुआत में. Big surprises, but good that in the pre-show we spoke about both of them. They can come in anytime they want. Oh yeah, this is lovely. As the photos suggest that the Chola Veerans are coming in with a nice cultural look, and Mojibur of course will be there as the Manipur majorly indicating what it has to indicate. And also in the toss, we just saw what just happened. Both the captains actually went out there and exchanged the pleasantries. That is nice. Akshay Desai flipping the coin over. Chola Veerans, yes, winning the toss. Arun Kumar Anjapuli. And there you go. That is the pleasantries that has been exchanged. Exchange of cultures. Wow. Manipuru goes to the Chola dynasty. And the Cholas, that is a very, very important gesture. It's called the Tundu, actually, where the Tundu is there on that, shoulder gives a lot of respect. Yeah, of course, he's wearing it for the first time. Arun Kumar Anjapuli, maybe that round headgear. So, yeah, he just fumbled, but nevertheless, yeah, this is what they've got. 9 losses, Arshit. That has been very bad. 8 on the trot. जी हाँ, 9 मुकाबले यहाँ पर हारे हैं. चोला वीरंस ने 3 मुकाबले जीते हैं. लगातार 3 मुकाबले शुरुआत में जीते थे, उसके बाद लगातार 9 हार आई है. 12 मुकाबलों में विन प्रतिशत और बेहतर करने की आवश्यकता होगी. बच्चे बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या आज यहाँ पर जो रिस्पेक्ट एज अ गेस्चर ऑफ टोकन यहाँ पर दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को दिया है, वही आप मैच पर देखना चाहेंगे. और भारत की विविधता में एकता का एक बार फिर से प्रतीक दिया युवा कबड्डी सीरीज ने. बताइए काजीरंगा राइनोस की बात करते हैं.
तो इनका भी विन प्रतिशत एटलीस्ट 0 से ऊपर बढ़ा है। ये इनके लिए बहुत अच्छा खेमा है, 7.69%। एक अच्छी संकेत है नवीन कि अब काजीरंगा राइनोस बेक ऑफ इस मैच में खेलेगा। Arshit, always my mathematics teacher used to say, listen, 0 has no value. But I used to say, no, you just add 1 in front of that. It has so much value. That is what the Kaziranga Rhinos have done. Yesterday, just winning by 1 match, they have enlightened this last day of the survival round number 2. We are ready for this knockout sort of a match as we go into the countdown and get this knockout match started. Yeah. Let's do this. Here we go. Just part 2. And the Chola Veerans winning the toss, so the first raid will happen from the Kaziranga Rhinos as Raki gives the go-ahead from left to right of our screens. There comes the man who always is a very, very good support, James Basumatari. He comes in across from that right side of the right flank against the left corner, Mahindra Prasad. We've always spoken and said if the defense of the Chola can watch out. Look at Gautam. He's not playing a high line defense. That is very nice to see. The right cover. He's playing an balk line sort of a defense. That's very good. या क्योंकि आप अमूमन गौतम को यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत करते हुए देखना चाहेंगे, बट ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मैच में देखिए अरुण कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा वहां पर कि किस तरह से वो प्रदर्शन अपने क्रम पर करके दिखला सकते हैं। एक और बार बोनस करने का प्रयास किया है अरुण कुमार ने, क्या यहाँ पर अच्छी तरह से लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से वो बोनस चुराया है। राइट कवर पर अटैक करने की कोशिश, सही समय पर राइट कवर के डिफेंडर पीछे नहीं जा पाए, इलियास खान। Oh yeah, that was something to start off for. Oh, Arun Kumar Anjapuli has not got a point after the decision. Better say It's 1 point. Oh, Raki Chola says Veerans. yes. Jersey number 9 out. Raki now gives it even, and look at Ilyas. Look at Ilyas. That naughty smile that he's got. Wait, He did Redder. not even raise the hand, Arshit. Look at that. Kaziranga Rhinos has raised the hand. Look at this. Now what? जी, और साथ ही साथ उसके बाद वो मुस्कुराते हुए ऐसा लगा था कि एक प्री वर्जन ऑफ बिहू करते हुए नजर आए। बिल्कुल वैसे ही चलते हुए वो जा रहे थे, पर पहला अंक चोला वीरन्स के लिए यहाँ पर प्राप्त किया है। अरुण कुमार ने राइट कवर पर अटैक करके, ऋषिकेश शर्मा एक बार फिर से बोनस का कोई ज्यादा प्रयास किया नहीं। एम्प्टी हैंडली यहाँ से वापस जाएंगे। Yeah, this is Mohandas, where he really needs to understand that he can just stay in the game. Rajashekharan Rajendran comes across. This is nice to know that Rajashekharan has got a chance. Right raider again. Yes, the reason for this is because Sujit's injury. Sujit's injury is not at all going down well with the Chola Veerans because he was a very, very good support raider for Arun Kumar Anjapuli. Nevertheless, first to order raid and Ethiopia Singh comes in. Nice that somehow mentioned Singh and of course Iranjit Singh, everybody with the substitutes. या ये थोड़ा समझ के बाहर है, और क्यों ऐसा किया है मनज साहब ने, ये भी शायद थोड़ा समझ के बाहर था। मेंशन भी आपको बाहर नजर आ रहे हैं, रंजीत आपको बाहर नजर आ रहे हैं, जिन दोनों के बारे में हमने बात की। अब डू और डायरेक्ट में सिर्फ 5 सेकंड से कम का समय शेष बचा है। क्या पता नहीं था तो को ये डू और डायरेक्ट है, बोनस क्या चुराया है। ओह, एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये भूल गए थे कि डू और डायरेक्ट है। He just showed what he can do with so many visuals explaining so many stories. Now do or die raid for Arun Kumar Anjapuli. This is interesting. He says it's a second raid. I think, that was, probably a mistake out there. So yeah, they are counting their number of raids. That's very good. And P. Raja also indicated that it's not your do or die raid. And never ever Arun Kumar Anjapuli goes in so much in advance for a do or die raid. So he is counting his raids. Tries out, goes too deep. Right corner, captain comes in. Mokipur does not dash it well. 1 point, Chola Again, Veerans. half-hearted Jersey number Arshit 8 out. जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से वही गलती हुई है जो आप अक्सर मोकीबुर से वहां पर देखते हैं। और मोकीबुर अग्रेशन जरूर बहुत दिखाते हैं। यहाँ पर साथी खिलाड़ियों से कह रहे थे कि साथ नहीं आया, बट मोकीबुर आपने पूरी तरह से वो एंगल कट कर नहीं पाए जिस प्रकार से आप चाहते थे। और लॉबी का अच्छा इस्तेमाल किया अरुण कुमार ने वहां पर, थोड़ा जानबूझ के अपने थोड़ा ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड हुए। टर्निंग इनवर्ड्स, टर्निंग आउटवर्ड्स की हम बहुत बात करते हैं। क्या एक बार आप हमारे फिर से दर्शकों को समझा सकते हैं कि एक राइट रेडर के लिए क्या इनवर्ड टर्न होता है और आउटवर्ड टर्न होता है? Simple, Arshit. See, like now for James, if he's ankle hold, fabulous from Mahindra Prasad.
Very good that he's waited for Raider his out. prey and 1 he's got point, it in the right Chola time. Veerans. So now see for James. James was a right raider. So when you say, see, more than inward and outward, it's about the Substitution, opposite Kaziranga angle Rhinos. for the defender. Please That's come. what is more needed. And who comes in? 22 in, Mention. 3 out. Mention his name and he 23 comes out. in. Mention Singh. I Right. wonder why he did not start in the starting 7, but nevertheless, it's good that he is back out there. So now for Mohan Das, he's a right raider. When you need to turn around, if you're turning, inward, that means you're turning from inside the defense angle. When you're turning outward, that means you're turning outside the defense angle. That's all. That is need to just cover the, angle opposite way. Anti-block. Right. What was that effort? Not needed from Raider Rishikesh saves. Sharma. 1 point, Chola ऋषिकेश Veerans. शर्मा Jersey number विंड 10 अटैक out. वहां पर करने चले गए थे और अगर आप ऐसे सोलो टैकल्स करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर मोहनदास जैसे रेडर और कोई भी यहाँ पर पहले एंटी ब्लॉक Right. किया, बहुत ज्यादा गैप वहां पर मौजूद था। यहाँ पर मेंशन को बुलाया है, मैं चाहूंगा रंजीत भी जल्दी आ जाए, क्योंकि डिफेंस को सशक्त करने की आवश्यकता है। ऋषिकेश जो कि एक रेडर है वो वहां पर थे, उन्होंने अटैक किया, बट अब मेंशन आए हैं। क्या मेंशन अपनी टीम के लिए रिवाइवल दिला सकते हैं? फुटवर्क का दर्शा रहे हैं, वार्म अप होने का प्रयास कर रहे हैं। Yeah, see, this has been the problem when your premium raider is not been starting in the starting 7. I wonder what was the strategy behind that. But he will take some time to get warmed up on the match. He will check what the defense is doing. Defense does not do anything, and he goes back empty-handed. And now Arun Kumar. Now this is very good because mention will not come in for the tackle. He knew it. He very, very clearly knew it. And Gautam Das and Raider mentioned save. both raiders 1 in a point, super Chola tackle Veerans. situation. Jersey number No 11 out. substitution change that was done by Manas. जी हाँ, मानस की हम वहां पर बात कर रहे थे क्योंकि कोच साहब Right. थोड़ा सा हमें एक अतिरिक्त वहां पर क्रम नजर आया और रंजीत जो है लेफ्ट कॉर्नर से बहुत अच्छे अटैक्स करते हैं। नवीन हमने उनकी डाइव्स देखी है, बट 6-0 चोला वीरंस बहुत समय के बाद। नवीन, मुझे लग रहा है कि मुझे काफी दिन हो गए कि जब चोला वीरंस ने ऐसी शुरुआत की और 6-0 से अभी लीड पर है। काजीरंगा राइनोज 0 पर है। मेंशन सिंह, इस बार देखते हैं कि क्या आगे जाकर कैसे रेट डालने का प्रयास करेंगे, क्या रिवाइवल ला सकते हैं। He has to get a touch point or else it's the all out that's going to lurk around it. Oh, he wanted to turn the pitch around, but the left corner. That Raider was out. very, 1 very good plus 2, attempt 3 once points. again from Mahendra Chola Prasad. Veerans. That's the first all All out out, that's gone in. Kaziranga Rhinos. Good that mention wanted to turn the pages All in. around on Praveen Kumar Ayanar. The right cover came in strongly. Let's look at that replay Right. once again. Very quickly, you will see what Please. the left corner did, Mahendra Prasad. There, Right. watch him. There, he turned the pages and then I think it was, Praveen Kumar Ayanar coming in with that strong back hold. Oh, this is Raider one-way save. traffic now. 1 point, एक Chola और बार Veerans. Jersey यानी number 9 काजीरंगा out. राइनोस कल जहां पर उन्होंने मुकाबला छोड़ा था ना, वहां से शुरू नहीं कर पाया है, वहां से पिकअप नहीं कर पाया है। इलियास खान जाए या न जाए, ऐसा लगा कि पहले दिखाया, पहले कमिट Right. कर गए, कमिट करने के बाद वापस कैसे पीछे आया जाता है। नवीन, ये भी इन्हें सीखना पड़ेगा काजीरंगा राइनोस को। तो ये ना कोच की टू डू बुक्स में आ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या और करना चाहिए। बट चलिए, अभी ऋषिकेश शर्मा है, ये एक लेफ्ट रेडर है, अभी तक आपको मेंशन जाते हुए रेड पर दिखाई दिए, बट क्या ये लेफ्ट रेडर कमाल पर कहेंगे। बॉक लाइन के आसपास नवीन, हमने मेंशन को भी देखा, हमने इससे पहले अथोबिया को भी देखा, सिर्फ बॉक लाइन के आसपास सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि चोला वीरंस का डिफेंस गलती करे। अभी भी पहला अंक नहीं आया है, 8 मिनट का खेल हो चुका है। Yeah, see, because this is a knockout game, it's a do or die match. The defensive errors needs to Bonus stop. plus 1 point, Yesterday, Chola Veerans. Manas Jersey Chetia, the number coach, 40 out. actually mentioned that we won the match against Sinsonics because the defense did not do any errors. He is, I think, definitely gone back Right. and heard our commentary. He's seen the match. We've been telling that the defense of Kaziranga Rhinos in the initial matches was way too advanced on their tackles, and that is why it was so many successful tackles in their lineup. Yesterday, they won it because Sinsonics did not go out there and attack the defense, and the defense did not go out there with advanced tackles. And Manas accepted that, but with this 12 points Chola Veerans has done, none of the Raiders have gone in and earned the point. The Raiders have been given away easy points for the Kaziranga Rhinos' defense. जी हाँ, बहुत ही यहाँ पर गलती रही है काजीरंगा राइनोस की डिफेंस की और चोला वीरंस की डिफेंस को भी। काजीरंगा राइनोस के रेडर्स ने आसान से पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, बट अब देखते हैं कि यहाँ पर राजा शेखर यहाँ पर आज आपको एज ए रेडर नजर आ रहे हैं। इनका इंक्लूजन किया गया है, एक नए खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। क्या कमाल कर पाएंगे, ज्यादा अंदर जाने का इस बार प्रयास नहीं किया। 5 का उसे ये इनकी पोजीशन से थोड़ा सा Yeah. डराने की कोशिश थी केवल। No, just look out what happened when Rajshekhar came back in an empty raid. What happened when the defense did not attack the raider? They did not give away a point, and in a do-or-die raid, James, he has to go in deep first. Try at least the bonus. That's okay, even if you have been ankle held by Mahendra Prasad. Goes for it. I think the dash. No, does not come in. Gautam.
He Red sees Upset, what 2 points. the mistake Kaziranga was from Ranu, Mahendra jersey Prasad. number 19 He and first 11 was hand touched James, and then that's the first point. Good one in a do-or-die raid. यहाँ महेंद्र प्रसाद को सबसे पहले टच किया, गौतम गए मिडरिफ पर जाकर अपर बॉडी पे थोड़ा सा डैश करने चले गए थे, इसीलिए अपर बॉडी ज्यादा मिड लाइन की तरफ वहां पर झुक गई थी और आसानी के साथ वहां पर 2 पॉइंट के साथ शुरुआत की है गौतम। पहला हमको ने डिफेंसिव प्राप्त हुआ था चोला वीरंस के लिए, बट उसके पश्चात इस डैश के चलते गवाएंगे पॉइंट। मोहनदास आएंगे क्या अपनी टीम को रिवाइवल लेकर देंगे? बिल्कुल महेंद्र प्रसाद और गौतम का इनकी पोजीशन पर पता था ये टो टच करेंगे, इनकी पोजीशन पर राइट इन पर शिकार बनाया, चारों का निश्चित। Jersey number 1 out. And the way he changed his angles as a right raider, turned around immediately, toe touch as a left raider, and that too on whom? James, who got those 2 points in a do-or-die raid situation. So he's taken off one more important raider, and Minson Singh has no support now. Minson Singh has to understand that he just needs to stay there, actually go in for those bonus points, or also he can attack Arun Kumar Anjapuli, because Arun Kumar will not be in a bent position. He's a tall raider. If he can go out there and attack him in that in that left in position, that will be really good. Goes for the kick on the right corner. Should have done it against Arun Kumar in that left in position. वहां से भागते हुए जब आ रहे थे तो जरूर वो कर सकते थे कार्य, बट यहाँ पर टाइम आउट मांगा गया। चोला वीरेंस के कोच बी राजा साहब कोई रिस्क इस मुकाबले में नहीं लेना चाहते हैं। Kaziranga Rhinos, please come. சொல்றது புரியுதா? போனஸ் போடலனா அடிக்காத. ஏய் கண்ட்ரோல் பண்றா. Okay, can you listen to Manas please, because they are only on 2. I understood what he is trying to say. அவன் பண்ண தப்பு நீ பண்ண கூடாது. அஃபென்ஸ் அழகா ஸ்கோர் ஆகுது. Can we hear for Manas Chetia? அழகா நம்ம Deva and வீட்டு team. ஓடணும். போனஸ் கிடைச்சனா போனஸ் பிளஸ் ஏத்தணும். ரைஸ் ஆயிரா. அப்படிதான் யூஸ் பண்ணி கொடு. கொஞ்ச நேரம் ஆட அதுக்கு அப்புறம் அழுத்தி ஆடு. Right. Now, because we always want to get the coach's mind when the team is trailing behind for a little bit of a conversation. As Arun Kumar Anjapuli now tries the bonus, might not have got it. Goes in, then probably will go out on an empty raid. यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ अरुण कुमार अंजापुली वापस से एम्प्टी नहीं है, लीजिए लेफ्ट कॉर्नर को टच वहां पर कर दिया था, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार वहां पर बना दिया था। एक अच्छा कार्य वहां पर चोला वीरंस अरुण कुमार ने किया। राइट कवर लेफ्ट कवर पर टो टच करना, इसका पूरा मतलब ये था कि वो अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए, और यही हमने टचेस अक्सर कपिल गुर्जर के विरुद्ध बहुत सारे देखे हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो पिछली रेड थी वहां पर लेफ्ट कवर के खिलाड़ी अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए, उनका वहां पर शिकार हुआ। बट अब देखते हैं क्या मैनचंद सिंह, इनका मैंने कभी हैंड स्ट्रेच होते हुए बहुत कम देखा है। यहाँ टर्निंग द पेजेस आउट करने का प्रयास किया है, जरूर शायद एम गौतम यहाँ पर बाहर चले जाएंगे, क्या बाहर से अंदर आए हैं, बट यहाँ एम गौतम बाहर गए हैं। मैनचंद सिंह ने अच्छा उन्हें बाहर किया, क्या एक ईच पॉइंट यहाँ मिल सकता है दोनों ही टीमों को? Very interesting, isn't it? Mention Singh. Raider, please stand here. The decision has not yet come out. Raki wants to discuss with her colleagues. We'll have to see what the decision will be. Akshay Desai and everybody. Akshay Desai wants another view from another corner. Now we can just go back and watch that replay once again. Gautam, yeah, he's struggling. He's really struggling on that left shoulder. Yeah, he's not feeling okay. He's definitely not feeling okay. He also is not able to 1 stand point out each. there. Jersey number 11. Each 1 point. Also out. Each 1 point, and Gautam wants a review. Please. Gautam Raider, says, let's go for a review. That's okay. please go. Because no defender has gone out, is what they say. Please go. Let's listen to Akshay Desai. Chola Veerans, Raider. please come. Raider. Raider. Raider out. Raider. Please. TV umpire, Chola Veerans challenge, Raider out. Our decision, 1 point each. Please review. And look at Mention Singh. He was wanting to run away. Chola Veerans have taken a review. Let's see. There is no points that has been going away from a defender. But what happened to Gautam? Why is he struggling with the leg? Yeah, that was a nice turn of pages. Wonderful work there from Mention Singh. Oh, I think Mention Singh and the other defender fell on the leg of Gautam. Oh, that is why he was struggling. And that is why Gautam also was very confident, Ashit, because he had a pain in that left knee and left ankle. So he thought that I have not gone out and let's go for the review. It's only Raider out. Interesting. So an injury turning out to be a review.
जो यहाँ एम गौतम लग रहा था कि एक बार वो पूरी तरह से क्या बाहर चले जाएंगे, पर उन्होंने अपने लेफ्ट लेग से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लॉबी को होल्ड करके रखा और यहाँ पर निर्णय बड़ा आसान नहीं होगा रामवीर साहब के लिए कि किसके पक्ष में रिव्यू जाएगा। क्या चोला वीरंस शुरुआती क्षणों में अपना रिव्यू गवा देगी या फिर रिव्यू यहाँ पर रिटेन करेगी। बट नवीन वैसी शुरुआत नहीं हुई है जैसे हम अमूमन तौर पर कल उम्मीदें लगाकर बैठे थे काजीरंगा राइनोस से। हैशटैग बहुत ही बड़ा मुकाबला ये दोनों ही टीमों के लिए था। मेंशन से और थोड़े से इस बात की जरूरत है और मैं अभी भी रंजीत का इंतजार कर रहा हूँ। पहला हाफ लगभग समाप्ति की तरफ है और साथ ही साथ इलियास को भी बड़ी जल्दी बाहर का रास्ता वहां पर दिखाया गया है। And there is not a right start for the Kaziranga Rhinos. In a must-win game, they have given away the initial advantage to Chola Veerans. I'm sure Rambir Singh will be looking at every angle possible because first he will say whether Minchin Singh crossed the midline. Two, he will also check if Gautam has gone over. Raki and Akshay Desai, everybody got into a conversation. They gave each 1 point for both the teams. Interesting, very interesting. And also, Arshad, the problem is whenever that bench, it is looking worried. They have dropped their shoulders because yesterday's victory gave them all that advantage to go out there and play a very important knockout game. They actually lightened up the entire survival round with their victory yesterday, because today the winner would have a clear chance to go through to the booster round from tomorrow. That is what we needed and we were all excited. Review But today successful. Raider the out. start, Point Raider Chola out, Veerans. and the review is successful for the Chola Retain Veerans. your review. They keep their review. Minchin Singh just goes out. But the only problem is, why was he not starting in the 7? That was the major problem. जो यहाँ गौतम को बिल्कुल सही तरीके के साथ उन्होंने टर्निंग द पेज रन आउट करने की कोशिश की, पर गौतम ने अच्छी तरह से अपने लेफ्ट लेग को होल्ड पर रखा। और नवीन, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है क्योंकि मेंशन रंजीत ने शुरुआती साथ में शुरुआत नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं अब राजाशेखर मौजूद हैं, क्या लेफ्ट कॉर्नर से ड्राइव आ सकती है। लगातार कोशिश की है उस ड्राइव को लगाने की, बट ड्राइव के अलावा डैशेस में मैंने बहुत कम पॉइंट देखे। मोकीपुर एक बार फिर से बाहर जाएंगे यहाँ पर एज अ राइट कॉर्नर। A very good running kick. That is not an easy skill. Rajshekharan, I think he's grabbed both the opportunities. He tries for the kick, does not get it on Gautam Das and goes for the hand touch on Mokipur. Right. Very defensive move there by Mokipur and very difficult skill that was being shown away by Rajshekharan. Because a running kick generally on the waist of any defender is very tough. So that's why I think he did not get the touch on the defender. He got that running hand touch, but Adobia Singh, can they go for it? No! Right cover. And this is Praveen doing a fabulous work once again. Good work. Nice. They have converted the corner defender into that cover and it's been doing really well. जी हाँ, देखिए एम गौतम वहां पर राइट कवर पर नहीं मौजूद थे, प्रवीण आयनार वहां पर मौजूद थे। जरूरी कॉन्फिडेंस बूस्टर वहां पर रहेगा, बट सिर्फ एंटी ब्लॉक करने के साथ साथ रेडर को थोड़ा सा टर्न करने की यहाँ पर आवश्यकता थी। कभी कभार सिर्फ वो बल से कार्य नहीं चलता है, बुद्धि का आपको उपयोग करना पड़ता है और बल के उपयोग में प्रवीण को हराना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये खिलाड़ी सेल्फ आउट हो जाएंगे बिना टक्के। राजाशेखर लॉबी में चले गए, कंटिन्यूसली बैलेंस नहीं कर पाए अपने आप को। And they have given away 2 points. That is 2 extra points. It was a super tackle situation and I will really appreciate Gautam Das. He escaped the hand touch, then he held his balance. There, he also appeals for the point. That's nice to see. Gautam has been taken off because he has a little bit of an issue in that ankle as Vanjanathan Venkatesan comes in. Vanjanathan was telling us yesterday that the defense, even without Gautam, could have been done well if he's got some support. And now today he's got Praveen Kumar Ayanar in that right cover for going ahead and getting him support. Because Praveen generally is a left cover defender, Rashid. And I think because Kaziranga have all the right raiders coming in, Praveen more confident compared to Vanjanathan has taken away that right cover position, which is a very good change. या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, बट वंजीनाथन का भी अभी तक कोई बहुत इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा नहीं है। जो सेम मिस्टेक गौतम प्रवीण ने की है वही सेम मिस्टेक वंजीनाथन भी करते हुए नजर आए। अब फिर से सुपर टैकल का मौका होगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर टैकल की गिनती में यहाँ पर टॉप 3-2 में शुमार है टीम, बट कितनी बड़ी गलती यहाँ पर हुई है। क्या यहाँ पर शायद इक्की अहमद मौजूद थे, उन्होंने डाइव लगाई पूरी तरह से और मुझे लगा कि वो तो स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे, इतना दूर था वहां पर उनसे रेडर। देखिए See outside the block line again outside the block line, and the raider was backtracking, already having an escape route in his mind. And look at this, as a left raider comes in and he's let go Vanjanathan. Praveen is not in a chain and you're giving away Mohan Das for the chain. I wonder why. This is not right. Why is Mohan Das in the chain?
See, these are small little practices they'll have to correct. 99 and 16. As a raider, why is he standing with a chain in the left cover defender when a left raider is raiding? See, this match can be easy because against Kaziranga Rhinos, you've got a good start, and Kaziranga Rhinos might not come back in this match. I think Mohan Das has got Gautam Das. Das versus Das, and Chola Veerans will be on 20 now. Jersey number 10 out. जी हाँ, ऋषिकेश शर्मा यहाँ पर बाहर चले जाएंगे। पूरी तरह से एंगल कट करने की कोशिश करना चाहते थे, बट मोहनदास ने कहा कि इतना बड़ा गैप है और इतनी बड़ी गैप में तो मैं मेरी 4-व्हीलर ले जाऊंगा। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर क्रम रहा काजीरंगा राइनोज। मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने टिकट करा ली थी ऑलरेडी वैसे कल सुबह की। पर चलिए, यहाँ पर चोला वीरन्स 20 पर है, 4 पर काजीरंगा राइनोज है। रेट पॉइंट 13 मिले हैं चोला वीरन्स को, अच्छी बात है। टैकल में भी 4 पॉइंट मिले हैं। सिर्फ एक टैकल पॉइंट काजीरंगा राइनोज के लिए। पूरे हाफ में हम बात करते रहेंगे सेकेंड हाफ में। बच्चा अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस मिलेंगे आप सभी के साथ बेहद जल्द। ओके, तो आइए आप सभी का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे थे। अभी तक एक तरफा बनाया है, बट नवीन क्या हुआ था टॉस पर, आइए उसकी बात करते हैं। सारा जहां ये जानता है, यह हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदू से हिंदुस्तान। और ये सभी देखिए, चोला डायनेस्टी और मणिपुर, दो अलग अलग कल्चर, असमी कल्चर। और जब कल्चर के साथ साथ एज अ गेस्टर ऑफ टोकन वी आर वेरी डिलाइटेड और प्रोफाउंडली हम इसका यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी इंडियंस हैं। और चाहे कोई भी कल्चर हो, हर कल्चर के साथ साथ रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही चुम्बेश्वरी एक्ट है यहाँ पर युवा कबड्डी सर्विस की तरफ से। नवीन, Why is Terence coming into our commentary box? No, don't allow Terence, because Terence knows zero about Kabaddi. I am very sure Terence does not know anything about Kabaddi. But nevertheless, high points coming in where you can only see the advanced tackles of the Kaziranga Rhinos' defense. That's been their problem. And yeah, Mahindra Prasad has been good in the corner. There, all the advanced tackles, and the Raiders are just enjoying this. Rajashekaran coming in place of Sujit Saga was very good. Gautam, I'm happy that he's getting a bit of a form. I was also mentioning to Gautam in the lunch break. We were just sharing a bit of a lunch as well. So I very clearly told him, you will have to play at least against the Kaziranga Rhinos. Even with an injury, that does not matter. Because if you need to win, you need to go out there and perform. That's all. Very simple. And I think this is the only defensive point that also was given away by the Chola Veerans to the Kaziranga Rhinos. Whatever we saw in the match summary, Arshad, it was just 2 raid points and that one extra super tackle point that was given away. As the toss was won by the Chola Veerans, they will go out there and inflict the second all-out of the match. And James Basumatre will try and jump around left, right and center, but then he'll have to surrender for this one. And good to see that Mohan Das and also Rajashekar getting some very important raiding practice, because against the Sin Sonics tonight at 8 p.m, this will come very handy for the Chola Veerans. जी हाँ, सिन सोनिक के विरुद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मुकाबला। पर क्योंकि चलिए अभी मुकाबला थोड़ा सी तरफ वहाँ पर हो चुका है, 23-4 का स्कोर है। अब यहाँ पर फिर से बदलाव है, मुकीबुर बाहर जा रहे हैं, कोई एक खिलाड़ी अंदर आया है। यहाँ पर इरनजीत को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर शुरुआती 7 में। सुपर टैकल उन्होंने बहुत अच्छे लगाए, पिछले मैच में शानदार अपना प्रदर्शन दर्शाया। कौन अंदर आए? इलियास खान यहाँ पर अंदर आते हुए आपको नजर आए। नवीन, कल्चर की जब हम बात करते हैं ना, भारत का पूरा हर एक कोना, हर एक गांव, हर एक गली में एक अपना कल्चर और जो संस्कृति है भारत की। और आपने कुछ दिन पहले बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही थी कि ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज हमसे बहुत कुछ लेकर गए हैं, बट वो हमारा कल्चर, वो हमारे इमोशंस हमसे नहीं छीन पाए हैं। और वही शायद हमारा सबसे बड़ा एसेट है। Even, I think, even if 1,000 more years, and of course if Earth survives 1,000 more years, and if the sun does not die down, the culture in India will never ever die. The sun might have end date, not our culture. The earth itself can have an end date. Yes, there is end of days that's coming. Sun, yes, our biggest or closest star for us is our sun. So when Yesu-yen sun will die down, our culture will not die down. So that's what I want to put it across as. And as you see, that is what keeps us rooted, that is what keeps us united.
Right corner. That is nice. He says, even I need some defense practice. Red alarm. Even 1 Vaidyanathan point, Chola Veerans. goes out there and nice block against James. So yeah, speaking about cultures, you know what happens. See, I'll tell you one small Right. instance. See, I like to, compare a little bit everything to food because food is one thing that everybody relates to. Yeah. Okay? So, oh my God! Left corner, left in. Nice to see Iranjit. This is why we wanted Iranjit 1 first point, in the Kaziranga starting Rhinos. 7. That's the first proper tackle point for the Kaziranga Rhinos. वाओ, एक तरफ यहाँ पर Right. बैक होल्ड के लिए खिलाड़ी गए, दूसरी तरफ वहां पर इनकी तरफ से खिलाड़ी गए थे, तो एक बहुत ही अच्छा अटैक वहां पर आया दोनों ही कॉर्नर और इनके खिलाड़ी की तरफ से, और यही आप देखना चाहते हैं। बट अब लीजिए मैचन सिंह, नवीन मैं चाहता हूँ अपना पूरा हैंड एक बार स्ट्रेच करें ऐसे, एटलीस्ट प्रवीण को थोड़ा पीछे करे वहां पर, और इस मुकाबले में पहली बार उन्होंने अपना पूरा हैंड स्ट्रेच करने की कोशिश की, वरना ये पूरा आदल आते हैं और वापस ले जाते हैं। Yeah. And if we can go back to that previous tackle from Kaziranga Rhinos, you saw two players, Iranjit Singh, Mention Singh. Yeah. Both of them, watch this, Iranjit and Mention, both of them going in. Wonderful work from our EVS operator, Ram Kumar. Yeah. At least not for Deva. Ram is listening to our commentary in the PCR. Thank you, Ram. जी हाँ, राम, और राम तो बड़ा नाम ही कमाल है ना यहाँ पर। और ये बात करें आप मोहन दास की, तो मोहन दास के भी नाम के बड़े चर्चे वहां पर रहते हैं, बट यहाँ पर अटैक किया था, जरूर वहां पर पॉइंट मिलेगा नहीं। और मुझे पता है ना, देखिए रेफरीज की अगर बात करूं, जरूर अभी जो स्कोर ट्रैकर है ये वापस बदलेगा, पर नवीन मुझे लगता है कि जब रेफरीज काजीरंगा राइनोज मना कर देता होगा ना कि नहीं कोई टच नहीं है, तो शायद उनकी बात 80% रेफरीज मान ही लेते होंगे। That is why Kaziranga Rhinos is the most loved team. They might not have won the Yuva Kabaddi Series' booster round place, but they have won everybody's heart. And yeah, talking about them, what a nice edit and cut there by Deva, our director. My God, you speak about Kabaddi spirits, and we saw the team which made all the trouble yesterday on the mat. Oh my God. Yeah, you know what, Bonus Deva, point, he Chola just Veerans. asks me to take out his name by making sure what he can cut out in the angles from the PCR. That is nice to see. Mention Singh in a do-or-die raid. Yeah, as you said previously, Arshad, he needs to stretch his arms. He should probably see more videos of, say Gagan Glorious Gowda or Shashank or anybody for that matter. And even Sanjeevi for that factor. They stretch out their arms. He's not got that wingspan. Oh, turn of pages was good. Mahendra Prasad Redder says just 1 goes point, in very, Kaziranga very Rhinos. advanced Jersey number from 19 the out. left corner. He almost has come in front of the right corner. जी हाँ, देखिए, और चेन में वहां पर नहीं गए, अकेले वहां पर चले गए थे, सोलो टैकल बॉक Right. लाइन के इतना आगे और आसानी के साथ रूट को ढूंढा यहाँ पर मेंशन ने, और अच्छा प्रयास वहां पर था। और जी नवीन, और हमने मेंशन के 70 से 80% पॉइंट देखे हैं जब डिफेंस उनके ऊपर अटैक करता है, उनकी एस्केपिंग स्किल्स अच्छी है, बट मैं चाहूंगा जब वो अगले एडिशन में आए तो उनकी अग्रेसिव स्किल्स के साथ साथ अटैकिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। बट राजा शेखर ने दिखाई है उनकी अटैकिंग स्किल्स अच्छा, एक बार फिर से शायद टोटल चाहिए वहां पर कवर के खिलाड़ी पर, और पॉइंट लगाया। Redder Yeah, says Rajasekhar 1 Rajendran, point, very Chola nice. Veerans. Jersey Very number swift, 11 out. small little pause and turn, and Gautam Das could not go back in time. He probably did not expect it. There, wow, brilliant, nice. Is a tall defender comparatively, Gautam Das. Right. He was having his left leg too much in front. And what is Sagar Panchal doing? Probably just sitting there. There, he's just watching out who is going to get revived. He's watching who actually is getting warmed up. There you see, top of our screen, Sagar Panchal. Yeah, nice character as well. Something similar to Deva as well, our PCR director. And they both are the very good friends. Oh, very much. You never know what all they have shared. Right. And we can't tell that on air. Deva and Sagar Panchal have shared so many things, that might not be eligible to be going out on air. और अब चलिए यहाँ पर राजेंद्र एक बार फिर से, बट राजेंद्र राजा नवीन, बहुत सारे नाम मैंने चोला डायनेस्टी से सुने, खासकर पहले राजा और सबसे पावरफुल राजा राज राजा शायद उनका नाम था, जो सबसे पावरफुल किंग ऑफ चोला डायनेस्टी कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जाने चोला डायनेस्टी के बारे में, तो नवीन मुकाबले में मजा आ जाएगा। और Yeah, absolutely. It is a very, very nice point, Arshad. For that, you know what? You just please once go ahead and watch Ponniyin Selvan. Of course, it is in the Hindi language also, that is dubbed. Aishwarya Rai has done a fabulous job. Ilyas Khan, what is he searching? What has he lost? I think his bike key or something. He's just lost it. He's just turning around in circles, goes back. Kaziranga Rhinos, Right. please come. Now, watch this. There. He comes Well in for the pursuit. No 40 toe out. touch. And then in that attempt, he lost his bike key. Right. And then he circles around, turns.
He's not found his power. Bike key goes back. Yeah, speaking about Rajas, yes, Raja Solan. That is what the first proper king. I mean, he was not the first crowned king. I'll tell you what. That is the Ponniyin Selvan. Arunmoli Varman. 1 point, That is Chola the Veerans. name of the Raja Jersey Solan. number 10 now. If you really go back and see a bit of a history, and then, of course, if you watch Ponniyin Selvan as a movie, you will know what Chola dynasty is all about. And you know Time what? out, Chola Veerans. India's first navy fleet was started by Chola Veerans. Let's listen to Manas, please. தொடவே மாட்றானே அப்ப The நம்ம என்ன coach பண்ணணும் who's trailing behind. Yeah, இறங்கணும் let's listen to him. স্কিல்ல ஏமாத்து அடிச்சு விடுவானு पहले रेट जब ठीक है लाइफ लाइफ तो ऐसा है और जल्दी हाँ हाँ ठीक है तुम दोनों खेलना अभी ठीक है डिफेंस पे रेट मत जा क्योंकि डिफेंडर सब इंजरी हो गया हमारा है ना Oh my God. डिफेंडर इंजरी हो गई वो भी ठीक है तो रेट मत जा इलियास Oh, that is so sweetly put across by Manas. He says to Ilyas Khan, saying, don't go for the raid. You please be in the defense, because all our other raiders are not in a position to go out there and defend. All our other defenders have been injured. His Ankur Modern comes in a do-or-die raid. He's been thrown into the grinder, and he will definitely struggle. And in this timeout by the coaches, yeah, my very close friend, my own, brother from another mother, Deva, was all attentive. Ankle hold was very nice. You know what, Arshit? I Bonus told point, Deva in the Kaziranga afternoon, Rhinos. Red don't out, eat 1 curd point, rice. Chola Veerans. When you eat a lot of curd rice, you will feel sleepy. I told him. And now he's awake. He exactly cut to the coach who was trailing behind. And we heard what Manas actually spoke from his heart. Good जी हाँ, work. बिल्कुल। Right. मानस जी ने हालांकि ज्यादा कुछ कहा नहीं, बट हमने पूरी बात सुनी जो उन्होंने टाइम आउट के लिए वहां पर कही। और देवा बिल्कुल जब भी आज से वो सलाद खाते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल आज बिल्कुल आप शॉट्स की बात करें, एंगल्स की बात करें तो बहुत अच्छे एंगल्स हमारे सभी साथियों के लिए दिखे। बट अब बात करते हैं काजीरंगा राइनोस की, एक बार फिर से साथ पर हैं। फिर एक बार राजो शेखर वहां पर नजर आएंगे रेड लगाने के लिए। इलियास को कहा था कि तुम्हें रेड पर नहीं जाना है, डिफेंस में अच्छा करना है, बट क्या वो वैसा प्रदर्शन आपको डिफेंस में इस टीम से नजर आ पाएगा? एमटी रेड के Strategic time साथ out. यहाँ वापस, बट अभी आइए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है और ले चलते हैं दोनों टीम के कोचेस की तरफ कि क्या वो वार्तालाप कर रहे हैं। Yeah, first Manas again. Really nice. তজি যাবি ডিফেন্ডাৰ আমাৰ কোনো নাই গম পাইছা নাই আৰু এটা ইঞ্জি আছে ইঞ্জি হৈ গ'ল মকিপুৰৰ ঠিক আছে তই দুটা ভিতৰতে কোনো যাব লাগিব দেই ঠিক আছে আৰু সেই ইলিয়াছক পঠাব নালাগে ইলিয়াছ থাকিব ইলিয়াছৰ সেই ডিফেন্সত লাগিব ইলিয়াছ ডিফেন্স অ'কে ঠিক আছে মেনশ্যন পুৰা ঠিক আছে ভিতৰত গৈ পিনে যদি পাওঁ ঠিক আছে হ'ব সাত দিন নহ'লে হ'ব নালাগে বাৰু যদি আহে কিন্তু মব লাগিব ভিতৰত হা জেমছ ঠিক আছে He just said that go out there and probably just go out because Mokibur, the captain from that right corner, is just is not able to go back in time because our physio team, our JSS Sports Science, is not feeling okay on that right shoulder. Yeah, we've spoken so much about Deva and his team. We've been saying only his team. But I'll tell you what, you just mentioned about the different angles that has been covered. That is very nice, and this is a nice time for us to go out there and mention the names of our lensmen. It's really important. On Camp 2 we have Karthik, and on Camp 3 we have Muthukumar, and on Camp 4 we have Selvam. Camp 5 is Udayan, and our jib operators of course are Satish and Prabhu. The arm operator of course Satish, and jib operator Prabhu, as James does not operate it well. Holds his balance inside the lobby without a touch, goes back empty-handed. And we all know our EVS operator, of course, Ram Kumar. And he's got one hairstyle which is very, very peculiar as a hairstyle. I'll tell you what, Arshid, there was a movie in Tamil called Pisasu. Pisasu is a horror movie. Fabulous, fantastic movie. That is one movie. Even it was a horror movie, it is a sorrow, emotional horror movie. You will feel, you will cry when actually the character the horror character, the girl who's played it, dies out. Really, you will start crying. It's an emotional horror genre. First time we have not noticed that sort of a genre at all. Emotional horror. And that hairstyle is so similar like that hero's hairstyle. You go out there on internet, you type Pisasu, you will see the hero's hairstyle. Completely falling on his forehead, on his eyes. You can't see his face at all. That is Ram Kumar's hairstyle. That is what he's sporting. And he told me that yes, I'm inspired by Pisasu movie and that hero who's got that hairstyle where his face is not seen. And then yes, of course, the highlights are always cut by Dina. And that is a fabulous, fabulous tackle point in a do-or-die raid. Letter out. And the ladies 1 here point, from Mysuru Kaziranga Rhinos.
are enjoying that one from the Kaziranga Rhinos. And because a Chola very Veerans, clear jersey knockout number match, 9 out. but this is turning out to be a practice match for the Chola Veerans against the Sinsonics later tonight at 8 p.m. And what we are watching is not nice. We can see that from the commentary Right. box. If our camera angles can pick it, it will be really nice. On the stretcher, this is what is really good, where he's been taken out on the stretcher. Gautam, you can see that on the stretcher where Number 14. he's Number been taken 14, out please. as well. That is not good. He's really struggling with the ankle, and also he's really struggling there with the shoulders as well. Just behind our commentary box, Gautam is not looking good at all. There. That is the angle. Wonderful work. Arshit, only you are there in the comment box? No, I'm also there. But not a good one. Gautam is struggling behind us. He just goes off with a stretcher on. Nice work. Very nice work. Deva and team, and of course our jib operators, Satish and Prabhu. Wonderful work, guys. As the Raider is 1 out. point, Chola Veerans. Yeah, Chola Veerans get another point. And जी not चोला वीरेंस यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा और नवीन आपने बिल्कुल सही कहा प्रैक्टिस मैच के तौर पर जरूर देख रही चोला वीरेंस बट एक बहुत बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर इंजर्ड होता हुआ नजर आया और हम बात ही कर रहे थे ना उनकी एंकल और उनकी इंजरी के बारे में उनके लेफ्ट लेग के बारे में तो यहाँ पर वो चलने में असमर्थ है जिसके चलते वहां पर लेकर गए हैं पर हम यही आशा करते हैं कि वो जल्दी मैच पर वापस आए यहाँ पर गौतम दास जिन्हें आज खेलने का मौका मिला अपने आप को पीछे ही नहीं कर पाए इतना ज्यादा आगे वहां पर खड़े थे कि आसान से यहाँ पर अय्यप्पन शायद गए थे और अय्यप्पन नवीन उनकी भी अलग मोटिवेशनल स्टोरी है जरूर आपने भी वहां पर जब पुडुचेरी में आप आए थे एज अ फूड काउंटर पर ये केटरिंग के साथ वहां पर मौजूद रहते थे हमें हालांकि बहुत सारा खाना खिलाते थे बट इनकी भी ऐसी स्टोरी उस समय भी लगातार कहा करते थे कि मैं कबड्डी प्लेयर हूं मैं भी सेम क्लब से खेलता हूं गौतम का बहुत अच्छा दोस्त हूं बट अब इन्होंने वो साबित किया है एज अ चोला वीरेंस के जैसे अपने स्क्वाड में नाम देखा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई yeah, very much. Nice, inspiring stories as well. Ayappan Veerapandian. That's very nice. And again, Iranjit Singh has been dashed out. Raider out. 1 And plus there 2, is 3 no point, Chola Veerans. answers All out, whatsoever. Kaziranga Another Rhinos. all out. Third all out. That's it. We prepared so much for the pre-show. All in. We made sure that we set up the stage nicely. I think we did not use that line Substitution. today in the pre-show. Kaziranga Yesterday we Rhinos. used. We used that line. At Two least let in, Kaziranga Rhinos 11 win out. in a pre-show. Yeah. If we had used that line today in the pre-show, that would have been nice. But I understand they've been struggling with a lot of injuries as well. And this was not a right way to go out there. He was turning blind. He's completely turning blind, and a very good dash from that left cover. जी और एक सब्स्टिट्यूट होकर अब एक खिलाड़ी यहाँ पर अंदर आए हैं समीर शाह नवीन और इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी है युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन के महज 16 साल और ये 16 साल से भी छोटे लगते हैं जब आप इनका चेहरा देखेंगे इनकी हाइट से लेकर इनकी पूरी फिजिक देखेंगे देखिए कितने छोटे हैं देखिए नंबर भी इन्होंने छोटा लिया है जर्सी में 2 नंबर जर्सी लिया है लेफ्ट रेडर है चलिए तो अच्छा है बताओ My God! क्या बात है क्या टर्न किया है और पहला रेड पॉइंट कांग्रेचुलेशन समीर I will tell thanks to Mahendra Prasad on behalf of Samir Shah because as a 16-year-old, and look at that turn! Look at the way he turned against the defensive angle. That is what, Arshit, that is what I was trying to explain, where an outward turn. Wonderful work. He did not turn towards the defensive angle. He turns away from the defense angle. Outward turn. Wonderful work. Ayappan Veerapandian. Oh, lovely outward turn. He says, if Shamir Shah can do it, 1 even point, I can Chola do it. Veerans. Once Jersey again, number 10 turning towards the right. Right raider turns towards the right. And outward turn utilizes the lobby. Wonderful. Anti-block. Brilliant. और ऋषिकेश मुझे लगता है इस मुकाबले में उन्होंने यही गलती चौथी या 5वीं बार की एज अ राइट कवर हालांकि इनका मेन काम रेड लगाना है बट एज अ राइट कवर वहां पर जिम्मेदारी ले रहे थे फिर से समीर शाह यहाँ पर आएंगे ओ तेज है लाइटनिंग स्पीड है इस खिलाड़ी में और राइट रेडर के तौर पर भी रेड लगा रहे हैं देखिए पहले उन्होंने लेफ्ट रेडर के तौर पर रेड लगाई जरूर इस बार प्रवीण ने कहा कि यहाँ पर हम गले लगकर दोनों बाहर आ जाएंगे बहुत अच्छा समीर शाह और राखी कुमारी Samir Shah needs to understand where to run away from. Let's go back to that replay. Unless and until, Match over. as that is the match over, unless and until Samir Shah comes out. Look at this. Raki will come and show the sign, and look where Samir Shah will come in from. He will come under the arms of Raki. Oh, we had to run it. We had to still run it to find out some nice minute intricate details. But nevertheless, another loss to the Kaziranga Rhinos. Kaziranga Rhinos, the team that is coming from Manipur, Assam, and of course Meghalaya, Arunachal Pradesh. They're representing everybody there, Nagaland, Mizoram. Thank you so much, guys.
you might not have won the match or you might not have got selected for the booster round, but there is no doubt that you have won our hearts. And especially yesterday when Manas Chetia showed us the Bihu dance of Assam, it was so nice to see that the celebration was good. But yeah, nevertheless, I'm happy for even the Chola Veerans as they got a nice match practice before a very, very strong match that's coming up at 8 p.m. Because right now, it is completely official that the Chola Veerans have made it through to the booster round. They are going in with a lot of confidence, and if they win against the Sonics tonight at 8 p.m, that will be what? Icing on the cake. जी हाँ, बहुत ही अच्छा उनके लिए मुकाबला रहेगा और इस मुकाबले में सब कुछ अच्छा घटा अगर वो गौतम की इंजरी को अगर आप भूल जाएं, बट गौतम अच्छी तरह से वापस जल्दी आए, हम यही उम्मीदें करते हैं, यही आशा करते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला था यहाँ पर। काजीरंगा राइनोस जरूर कुछ नया शायद इस मुकाबले में ट्राई करना चाहता था, बाकी और खिलाड़ियों को मौका करना देना चाहता था, बट काजीरंगा राइनोस में जो अंतिम 2 रेड रही ना, एक भी एम्प्टी रेड समीर शाह ने नहीं लगाई है। दोनों रेड में अपनी टीम के लिए चाहे वो कैसे भी पॉइंट लेकर आए हो, पॉइंट लेकर आए हैं और ये तो यही कहना चाहेंगे ना कि किस तरह से काजीरंगा राइनोस के लिए रहा है। 5 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट्स, एक्स्ट्रास के 2 अंक है। चोला वीरंस ने बहुत अच्छा किया, रेड में 10 टैकल पॉइंट प्राप्त हुए। मोहनदास को 8 रेड पॉइंट मिले, प्रवीण कुमार को 3 टैकल पॉइंट मिले। बट काजीरंगा राइनोस के लिए आपने बिल्कुल बात सही कही नवीन, कि ये दिल पर एक छाप छोड़कर गई है टीम। जा जरूर रही है, जरूर आपको यहाँ पर कल से ज्यादा नजर नहीं आएंगे, बट इस टीम ने दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाई है with their spirit. No, I really want all the players of the Kaziranga Rhinos also to make an attempt for the next series as well of the Yuva Kabaddi series. When we are starting off with that, winter and monsoon editions, they will have to come in. Especially people like Merchant Singh, Ilyas Khan, and Ikti Ahmed. They can actually come in and play in any of the other teams and make sure they get more into Kabaddi. As Mohandas Vishwa Mohan will be really happy that he's got a very, very good opportunity as a best raider, and Praveen Ayanar as a best defender. Next, the Kannada team takes on against the Chambal challengers. We will be speaking into a short break and come back soon for this lovely match at 6 p.m.
Humpy Heroes are all set now to take on against the Chambal Challengers. Welcome to this last day of the survival round number 2, where match number 63 is all set to get underway. The Kannada team are about to play the game after yesterday's break. So are they a little rusty, or do they get that break very nicely, is what we will find out now. As Harshit, can we have both the teams on the mat, please? Okay, so time for the second game of this supreme set. None other than the most successful team of YKS history, Humpy Heroes. दुर्गेश कुमार के प्रतिनिधित्व में आ रहे हैं एक और बार चैलेंज पेश करने। किसके साथ? जी हाँ, अब आ रही है टीम चंबल चैलेंजर्स। Thank you so much, Harshit, as it's a very, very important match because Humpy Heroes wants to go into the booster round with a nice victory behind their back. And as the Chambal Challengers also would want to do the same thing. They want a victory as well. But not easy, this match. It's going to be a really, really tight one because it's going to be the Raiders of the Humpy Heroes versus, of course, a little bit of Raiders as well for the Chambal Challengers, because Durgesh Kumar and Sanskar Mishra out there will be coming out against this strong defense of Sukesh Kula and Narsimha Murthy. Trusted corners by Narsimha, the coach, and Madhu Kaverappa, the captain, will be going in with his two stalwarts of Raiders, Shashank and Gagan Glorious Gowda, and that trusted combination of the covers of Shivakumar and Suhas Nagaraj. Teja Nayak will come in when needed. Rutik, Krishna Kumar, the right corner, will come in when he feels that Narsimha Murthy does not work out well. Devanathan is another defender, and Kiran BS another Raider. As I have another defender in the commentary box. Radhika ready? Hi Radhika, good evening. Good evening, Naveen. A warm welcome to everybody who's watching on FanCode. Yes, this is the starting 7 of some Chambal Challengers. Sanskar Mishra will be, teaming up with Durgesh Kumar and Ajay Maravi in the raiding unit, and we have Gopi Malipalli finally settling to the right cover, Naveen, and the left cover with V Aniket. In the left corner we have Javed Khan, and in the right corner we have Durgesh Sahu. In the substitution lineup we have just 3 of them, Laksh, Rehan and Kapil. Oh yeah, very much. Now, much important that they can go out there and make sure that this is another contest. Wow! Gagan Glorious Gowda has a match against Durgesh Kumar, and Durgesh is just 4 points away from Gagan Glorious Gowda. Radhika, you want to take a bet? And after this match, who will be on top? Quickly, Radhika. Gagan. Okay, nice. Let's see. You thought for a while, but then let's see if Gagan can cross over. Ankit Jat and Lokesh Gosalia, and also Rajendra Baka. So lovely to see all the corner defenders out there. Aravali Arrows, even with so much of defense behind their back, they are struggling because the Raiders are not working for them. Top 3 defenders, yeah, looks good. And also in the toss, there's some special things that's happening in this last day of the survival round number 2 here in the indoor stadium of Chamundi Vihar, Mysuru. We are exchanging pleasantries and we are exchanging cultures of all the sides that's happening. There you see, we can see what has just gone in. The Mysuru Peta has been given away by Madhu Kaverappa. On our right side, Madhu Kaverappa wears the all-respected Mysuru Peta, and that is a big sign of respect where they are coming in for the toss. And on to our left side, the Chambals. They are going in and making sure that they have their pleasantries ready. A nice headband and a nice, sleeveless, wear out there. And that will be exchanged after the toss. As Durgesh Kumar has won the toss, he said that, okay, I need the court. As
they can exchange the pleasantries. Yeah, captains, go for it. Madhu Kavirappa, are you going to wear that and raid? No, come on, give it up. That is what we do in Mysuru. That is Atiti Satkara, we say, as we say that as the guests have come in. And yeah, Durgesh, he will just give the coin first and give that pleasantry to Madhu Kavirappa. That is lovely. This is awesome and wonderful. Oh, this is even better. He's gone out there and he's made Madhu Kavirappa wear that headband. Ah, that is nice. Lovely gesture that has been shown around. Very, very good loves and pleasantries and of our cultures that has been exchanged. This is another feather in the cap or feather in the there you go, that's the feather in the cap. I was about to say feather in the cap of Yuva Kabaddi series, but that is again a nice feather out there for Madhu Kavirappa. Radhika, wonderful to see this. Absolutely. This is something, for genuinely very first time I'm watching something like this. And yes, the top second raider, there is a seesaw battle between both of them, but then 11 matches played, Gagan Gowda. 112 is the rate points and 97 is the rate strike rate. I don't think, this rate strike would be beaten by anybody. Yeah, absolutely. And against him, look at that, the left armband. The pink band was first worn by Gagan Glorious Gowda. And I think, even I feel that Gagan will overtake Durgesh Kumar, 116. So this match is pitted against the top two raiders of the Yuva Kabaddi series of the summer edition. Who will be finishing up on top is the big question. The result of this match will definitely be one that we'll be watching for. 1 tie and 5 losses for the Hampi Heroes. Not a very strong survival round number 2. But I'll tell you what, the inclusion of Shashank has made a world of good. That is very, very nice, where they have gone ahead and found a strong left raider in terms of supporting Gagan Gowda, who's raiding from the left, who's raiding from the right. Gagan raids from the right and Shashank raiding from the left, supporting him in very nicely. And Chambal challenges, Radhika?